Hello people, welcome back to my YouTube channel. So our today's topic is OBE examination which is being conducted by Delhi University. OBE is basically open book examinations which all of us might know, and I have made this video especially for the first years who are attempting their examinations for the first time under Delhi University, and that too in a very new form of mode which might be a little confusing for them. So I thought, why not make a video on my past experiences with open book examinations in my last semester. So let's get started. First and the very important thing here is कि हम लोग सोचते हैं that it is just OBE and we have all the material with us, so it will be quite easy, and that is what I thought, to be honest. And guys, it isn't that easy. Like, it is definitely easier than examinations which are held in person. लेकिन जो है इसके लिए कुछ simple tips and tricks हैं जो अगर हम use करेंगे, they will be quite helpful for us and it can help us stand out with our grades as well. So the first thing here is कि जब भी आप अपना कोई भी मटेरियल रीड कर रहे हैं फॉर योर ओपन बुक एग्जामिनेशंस या रीड नहीं भी कर रहे हैं तो just open your book or whatever notes you have in soft copy, because most of the students are using notes in the form of soft copy. तो हार्ड कॉपी आप बुक्स के फॉर्म में जब हम रीड कर रहे होते हैं, हमें हैबिट होती है कि हम सब चीज़ें मार्क करके रखते हैं, जो भी वट एवर थिंग वी फील इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी माइट हैव टू इंक्लूड इट इन आवर आंसर्स, हम पहले से उसको मार्क कर लेते हैं. लेकिन while we are reading in a laptop or in a PC, what happens is we do not mark anything and we just go on with thinking that सब कुछ है तो सही, बट बस हमें लिखना ही है. बट instead of that, make sure that when you're reading, you are highlighting the important things which you feel you should include in your answer. So for that you can use simple apps like Power PDF or Adobe Reader. इन सब से क्या हो सकता है कि जब आप रीड कर रहे हैं तभी आप हाईलाइट कर सकते हैं सारी important things, and while you're giving the examinations you won't have to look through each and every line over and over again and get confused and end up with having less time than what was given to you. अब दूसरी जो ट्रिक है दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, और आप सोचोगे कि यार ये तो पता ही है, बट वी ऑफन ओवरलुक इट बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी. दैट इज प्रैक्टिस योर राइटिंग स्पीड. ऑल्दो वी नो दैट एग्जामिनेशंस ओपन बुक है, ज़्यादा हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट हैपेंस हियर इज कि टाइम का थोड़ा इशू रहता है. ऑल्दो यू थिंक दैट यू हैव 5 hours और 4 hours और वट एवर, लेकिन जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो वो ऐसे लगता है कि एकदम चुटकी चुटकी में टाइम निकल गया. ओके, सो वी डोंट हैव टू gamble with time like that. We can in prior practice writing, and while practicing you can just write introduction of some important topics which you think will come in your exam. Keep watching and I'll give you some important points कि कौन से वो topics हो सकते हैं जो definitely आते ही आते हैं exams में. मतलब I won't guarantee it, but yes, they are more likely to come. At least 70 to 80% chances होते हैं कि वो आए ही examinations में. उन topics को लिख के आप लोग अपनी writing practice कर सकते हो. तो इससे क्या होगा कि आपकी writing speed की भी practice हो जाएगी और आप introductions भी लिख लोगे topics की, जो आप बाद में अपने examination answers में भी include कर सकते हो, right? So that will be a plus point. So the next tip here is that you keep all your material downloaded before your exam, so that even if there is any kind of internet problems or electricity cutoffs, you are not sitting idle, and because of which your time can also get wasted during the exam. तो आप सब कुछ पहले से ही डाउनलोडेड रखो. दैट इज़ हाउ द ड्यू एग्जामिनेशन फॉर्म ऑल्सो अपीयर्स. इट इज़ already downloaded as soon as you click upon the link to download the form. तो अगर बीच में आपकी लाइट चली जाती है या आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो you do not have to worry about anything. You can just carry on with your exam with that one PDF of the question paper and all the downloaded material that you have. अब जब नॉर्मल एग्जामिनेशंस होते थे ड्यू में, सो इट वाज सच अ कॉन्सेप्ट दैट वी यूज्ड टू जस्ट लुक एट आवर पास्ट ईयर पेपर्स, एंड दिस थिंग इज क्वाइट
it happens quite evidently in DU that जो past year papers होते हैं उसी के questions repeatedly आते हैं every time. This has happened with me during my 2 years or 3 years of college. I have seen that during every semester there are at least 2 to 3 questions which are repeated from past year question papers. So make sure you go on to the DU website and you check out the past year papers, download them. There are subject wise question papers on DU site which you can find quite easily. Even if you are not able to get the link, I'll give the link below in the description, and you can check out those question papers in order to definitely get a little comfortable with the examination style, and it's gonna be easy. You don't have to worry. Now another thing here is कि कई बार क्या होता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि यार क्या लिखें, इसका तो आंसर हमें पता ही नहीं है, हमने तो बुक्स वगैरह पढ़ी थी, अब we don't know. Definitely none of us studies like we have studied the entire semester and we know the concept. So what you can do here is कि अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है and you know कि ये कौन से पार्ट ऑफ थ्योरी से आया है, तो you should at least include some part of theory in that answer so that you don't have to leave it just like that. Like अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आपको कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया है तो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग थ्योरी ऑल्सो, जिससे कि 4-5 पेजेस थ्योरी के हो जाए और 3-4 पेजेस अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लिख देते हो तो इट कैन बी टेकन एज अ फुल फ्लेजेड आंसर और आपके उसमें मार्क्स नहीं जाएंगे. सो इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप हियर. तो टुडेज बोनस टिप इज कि हाउ डू यू फिगर आउट कि कौन से पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस हैं जो कि जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड हाउ यू कैन राइट देम एंड प्रैक्टिस योर राइटिंग स्पीड एज वेल एज you can just prepare some answers before your examinations and include them in your answers. So as soon as you look at your syllabus, unit wise syllabus and the past year paper, you realize कि कुछ topics होते हैं हमारे syllabus में जो कि repeatedly आ रहे होते हैं in the form of questions. मतलब DU ज़्यादा मेहनत नहीं करता है अपनी language change करने की, वो as it is दे देते हैं questions के form में. You can just figure out from your syllabus that what are those topics which are being repeated. So as soon as you figure out that topic, what happens is अगर कोई भी topic ऐसे repeat हो रहा है तो उसकी introduction आपको डेफिनेटली आंसर में इंक्लूड करनी ही करनी है. ठीक है, मतलब जैसे कि हो सकता है कि यार क्वेश्चन अगर पार्ट्स में जैसे मान लो व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन और उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन या लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो जो इंट्रोडक्शन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का वो जो है दैट विल रिमेन सेम, right? So you can practice writing the introduction parts of these questions, and with the help of which your writing speed will also get practiced, and as well as you can prepare some answers in advance. Now some of this can get wasted, but again we'll be a little bit well prepared in advance, so I don't believe there is any harm in doing this. Do let me know if it works out for you. Okay guys, this is all for today, and I hope the video was a little bit helpful as I tried to make it, and we'll meet in our next video super soon. Till then, take care, bye bye. Like the video, subscribe to my channel if you like the content, comment down below what all did you find useful, or what all do you want to know more about OB so that I can include them in my future videos. Okay, bye bye.